धन्यवाद। अब हम बुक रीडिंग करेंगे, उसके लिए मैं सेशन दीपक जी को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू दीपक जी। थैंक यू पूनम जी। जो हम आज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन का हम पहले मेन पार्ट करते हैं जो बीको जी की अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद हम सेक्शन 943 पढ़ेंगे। The four elements are earth, water, heat, and air. These represent four various modes of matter: solidity, fluidity, energy, and distension. These four are inseparably united in any unit of matter from the smallest to the largest and most complex. These elements are not merely properties of external world, however, but also of our own body. Thus, one must contemplate them in relation to one's body, as the Satipatthana Sutta teaches. The three suttas combined in text 943b show that these elements can be viewed as impermanent and conditioned from triple standpoint of gratification, danger, and escape. And fourth, by way of the fourth truth pattern. तो इसमें जो विभूति के चार एलिमेंट्स की बात कह रहे हैं, पृथ्वी धातु, जल धातु, हीट और वायु धातु, ये बेसिकली अल्टीमेटली जो मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि खाली जो संसार हमें एक्सटर्नली दिखता है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, बट हमारा जो शरीर है वो इन्हीं धातुओं से भी मिलके बना हुआ है। तो उसके रेफरेंस में विभूति कह रहे हैं कि सतीपटन सूत्र में जो इन धातुओं की बात आती है वो उनको इस तरीके से देखा जाता है कि ये इम्परमानेंट है, कंडीशन है, और इसके अंदर एक तरह का ग्रेटिफिकेशन, डेंजर और एस्केप इन स्टैंड पॉइंट से समझने की बात कर रहे हैं। तो जो चार आर्य सत्यों का जो पैटर्न है, उसके बाद भी विभूति यहाँ पे कह रहे हैं। Monks, these are these are there are these four elements. What four? The earth element, the water element, the heat element, the air element. Those ascetics or Brahmins, monks who do not understand as they really are the gratification, the danger, the escape in these four elements. These I do not consider to be ascetics among ascetics or Brahmins, among Brahmins. And these venerable ones do not, by realizing it for themselves with direct knowledge, in this very life enter and dwell the goal of asceticism or the goal of Brahmana. But those ascetics and Brahmins who have understood as they really are the gratification, the danger, the escape
in case of these four elements, these I consider to be ascetics among ascetics and Brahmins among Brahmins. And these vulnerable ones, by realizing it for themselves with direct knowledge in this very life, enter and dwell in the goal of asceticism and goal of Brahmana. Those ascetics of Brahmins who do not understand as they really are the origin, the passing away, the gratification, the danger, the escape in these four elements, these I do not consider to be ascetics among ascetics. But monks, those ascetics and Brahmins who understand these things, these I consider to be ascetics among ascetics and Brahmins among Brahmins. And these vulnerable ones, by realizing it for themselves with direct knowledge in this very life, enter and dwell in the goal of asceticism and the goal of Brahmana. Monks, those ascetics and Brahmins who do not understand the earth element, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation, who do not understand the water element, heat element, the air element, its origin, its cessation, and way leading to its cessation. These I do not consider to be ascetics among ascetics. But monks, those ascetics and Brahmins who understand these things, these I consider to be ascetics among ascetics and Brahmins among Brahmins. These vulnerable ones, by realizing it for themselves with direct knowledge in this very life, enter and dwell in the goal of asceticism and the goal of Brahman. I think जो यहाँ पे भिक्खु बोधी ने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि these elements can be viewed as impermanent and conditioned, then from triple standpoint of gratification, danger, and escape, and by the way of four truth pattern. I think इसी का एलिमिनेशन सूत्र में आ रहा है कि भगवान यही कह रहे हैं कि मैं उन्हीं को ही सच्चा एस्थेटिक या ब्राह्मण समझता हूँ जो मैं उनको सच्चा ब्राह्मण या एस्थेटिक नहीं समझता जो ये जो फोर एलिमेंट्स है इनका ग्रेटिफिकेशन इनका डेंजर इनके एस्केप को नहीं समझते हैं और अगेन उसको भगवान रिवर्स में भी कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट और ब्राह्मण सच में समझते हैं उनका ग्रेटिफिकेशन डेंजर और एस्केप फ्रॉम दिस फोर एलिमेंट्स उन्हीं को मैं सच्चा ब्राह्मण या साइंटिक मानता हूँ तो उसको भगवान आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वही सच्चे ब्राह्मण हैं जो समझते हैं इनका ओरिजिन और passing away for this, I think the gratification, danger and escape और इसी को आगे वो भगवान फोर नोबल ट्रुथ से रिलेट कर रहे हैं its origin, its cessation, its way leading to the cessation. इस पे एसपीजी आप कुछ फर्दर एक्सप्लेन करना चाहेंगे थिंक वही बात है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसका ओरिजिन क्या है अर्थ एलिमेंट का
सिमिलरली वाटर एलिमेंट का एटसेट्रा, और इनकी सेसेशन क्या है और वे लीडिंग टू द सेसेशन। तो ओरिजिन तो जैसे आहार है, and I mean, if you look a little at him, the person, the four elements expressed in the person in the form of these four elements coming from whatever we consume, and that brings in the connection between inside and outside. जो अर्थ एलिमेंट बाहर है वही अंदर है, जो वाटर एलिमेंट बाहर है वही अंदर है, जो हीट एलिमेंट बाहर है वही अंदर है। शायद यही मतलब है इसका। और इसका जो सेंसेशन है, मतलब इफ यू फिर ये भी बात आई है कहीं पे, यहाँ पे तो नहीं लिखी हुई, कि these elements even outside such big earth is impermanent in the sense that it disappears over time. Water also disappears over time. इस सूत्र में नहीं लिखी हुई, लेकिन वो impermanence जो अर्थ एलिमेंट है अंदर या बाहर दोनों impermanent है वगैरह वगैरह। Maybe I'm on the wrong track. तो ये किस कंटेक्स्ट में यहाँ लिखा है, मतलब इनका मीनिंग तो मुझे क्लियर है, लेकिन यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में सडनली आ गया, आई डोंट नो। एक है कि बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द arising and cessation of this. They arise and they eventually disappear, and that's basically impermanence. Arise from causes and disappear when the causes are not there. एसपी सर, ये जो अपने एलिमेंट्स हैं, जैसे so long we are alive, these will be remain there. Am I right in thinking like that? As long as you keep on eating food and are alive. Yeah. Only when we stop breathing, then the air element will go. मतलब ये तो हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है ना, ये चारों एलिमेंट। बेसिकली इम्परमानेंस की बात है यहाँ पे। हाँ, मतलब वो तो हम ही इम्परमानेंट हैं, तो नेचुरली वो भी इम्परमानेंट है। बट नहीं, इट्स अदर वे राउंड। इसमें मैं ये समझ नहीं है because even these elements are impermanent, so somebody, a person, or what if you consider a person who is basically nothing but these elements, how can he be permanent? तो ये तो बड़ी बहुत एयर बहुत बड़ी एलिमेंट, बात हो रही है। एयर एलिमेंट इन इटसेल्फ, I mean, there is, can also disappear ना, can also I mean, वो तो so हमारा वो यहाँ बात अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो फिर तो सभी कुछ डिसअपियर हो जाएगा। नहीं, आई थिंक यहाँ पे इनडायरेक्टली मुझे बोला है, मुझे समझ आ रही है कि कह रहे हैं कि जब एक्सटर्नल एयर एलिमेंट इटसेल्फ इज इम्परमानेंट। ये जो ग्रेटिफिकेशन की जो बात है ना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ग्रेटिफिकेशन विद दीज इस एलिमेंट्स। पैराग्राफ में ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं है, बट पढ़ा था ना पीछे अभी। वो तो क्लियर है ना, बिकॉज वी फॉल इन लव विद आवर बॉडी, फॉल इन लव विद आवर ब्रीदिंग, विदाउट ब्रीदिंग यू कांट एग्जिस्ट। हाँ, मतलब it doesn't mean gratification. I am breathing because I am alive. That's why I am breathing. And the day my breath will stop, it will stop. That's all. But so long I am alive, I have to breathe. And the air will be, then air element is always there till I am alive. And similarly, other elements are there till I am alive because I am eating, I am interacting with the nature. And so these elements are always there. Gratification in the sense with the elements, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
अगर आपका ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए हम्म, या ब्रीदिंग अरे होने वो में तो डिफिकल्टी लगे, हाँ, तो obviously you don't feel good, isn't it? So so that you want to doesn't, you see, you want that to feel good. is, You want to feel good and in normal health, right? I had faced this situation where I could not breathe, and I knew that I may be dying any moment. I mean, at that time, you don't understand. You are just struggling to breathe. That's what happened to me. I So don't struggled to breathe, and I so could don't breathe then. so you wish that that problem goes away, isn't it? But it is not a gratification. It is so long I am alive. I am bound to breathe. यार अगर नहीं सांस नहीं लूंगा तो जिंदा नहीं रहूंगा. So तो I'm वही doing तो everything possible to ensure that my lungs are proper. so I you're do my attached. inhalation and everything. I mean, will I call it a gratification because I have Being to attached remain to alive? so that is the point, no? You want to be alive. I have a disease wherein my lungs have been affected, and now I have to have a medicine wherein I have to regularly inhale and exhale in a proper manner. I do my pranayama. So all these are being done to keep myself healthy. Now, will I call it a gratification? I mean, I Yes, need to be healthy. Healthy body तो चाहिए ना मुझे. but that means you're ignoring Bhagwan's advice that you can't always be healthy. No, but so long I can try. I mean, I cannot Yeah, be healthy. sure, I know. sure, I will sure. have to try and keep myself उसमें कोई healthy इश्यू as नहीं much है, as. ट्राई करने में कोई इश्यू नहीं है, but as long as you attach yourself to these things, being alive, when you if you're fully resigned to the fact that despite the medicines, I may go away and it doesn't matter. It's okay. That's a thought process that we all know. I mean, That thought process comes from reflection, no? The yeah, thought process comes from that understanding, reflection we have been having now for so many from years. understanding. So तो that वही is उसी की that's बात. okay. That's okay. But to emphasize on this point that gratification with the air or earth or any other element Maybe somebody else can explain. is I I don't know. I mean, I fail to understand. I mean, maybe it's my own problem. I think I may have to study more about it. Thank you. Sorry. I mean, please continue. gratification means basically you start enjoying it. That's what gratification means. You don't enjoy it, that's fine. Then it's fine. If you take too much interest in your enjoyment part of it, taking delight in it, that's the definition of gratification as per Sutas. Taking delight. One thing is when you want to remain healthy, definitely there is a happiness in that. There is nothing, no doubt about it. That you do yoga, you do pranayam, you are walking, you are doing all these things. So happiness is bound to be there. Now, whether it is a gratification, I mean, yes, I'm very particular to do yoga every day. I'm very particular to do breathing exercise every day. I don't think Bhagwan is saying you not to do that. so that means I know I'm getting old enough and there are bound to be problems as I age. Eyesight जा रही है, वो जा रहा है, ये जा रहा है, सब कुछ हो रहा है. In spite of that, if you want to be positive, then this is very important that we do care about our physical body as much as we can. I mean, as one grows, there is limitations are always there. But yes, there's, I mean, yeah, there is craving, to do exercise, to do it every day and to ensure that, yes, your muscles are okay, fine. So all those things are there. But it's just to maintain this body. Now, I think whether, that is fine. But suppose you start taking pride in your muscles. oh, I'm such a that's muscular not the person. goal. No, I'm not talking about you. Oh, yeah, I agree with you there. I agree with you there. Yeah, there is a, I mean, if somebody says me at this age, So that is oh, a you look gratification. very, That is a you look very gratification part. young, you look quite young. So there is a feeling of satisfaction inside. So maybe that that reflects in the mind. Yes, you are right there. अच्छा लगता है, जिसे कहते हैं ना अच्छा लगता है.
Maybe that is sort of a gratification then. Yeah. Thank you. Thank you. सॉरी दीपक जी, से ज्यादा मैं ठीक से नहीं समझा पाऊंगा. तो एक बार हम आगे बढ़ते हैं. The 6 elements include the 4 physical elements and the space element and the element of consciousness. Text 943, a long excerpt from MN 140, explains in detail how to contemplate the 6 elements in relation to physical body, the external world, and conscious experience. How monks does one not neglect wisdom? There are these 6 elements: the earth element, the water element, the fire element, the air element, the space element, and the consciousness element. What monk is the earth element? The earth element may be either internal or external. What is internal earth element? Whatever internally belonging to oneself is solidified or clung to, that is head hair, body hair, nail, teeth, skin, flesh, sinews, bone, bone marrow, kidney, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, intestines, mesentery, and feces, or whatever else internally belonging to oneself is solidified and clung to. This is called the internal earth element. Now both the internal earth element and the external earth element are simply earth element, and that it should be seen as it really is with correct wisdom. Thus, this is not mine, this is I am not, this is not myself. When one sees it thus, it really is with correct wisdom, one becomes disenchanted with earth element and makes the mind dispassionate towards earth element. तो इसमें जो 6 एलिमेंट्स की बात आ रही है, इसमें जो पहले एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, उसको भगवान कह रहे हैं कि वो या तो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल. एक्सटर्नल जो हमारे आसपास हो, एवरीथिंग एल्स जो हम देख पाते हैं, लाइक अर्थ और एनीथिंग एल्स. इंटरनल को वो डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे शरीर के वो पार्ट्स जो कि सॉलिड है. और इसमें जो 32 पार्ट कंटेम्पलेशन है, उसमें से जो पार्ट्स लिए गए हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी बात आई है कि शरीर के बाल, सर के बाल, शरीर के बाल, हमारे नाखून, हमारे टीथ, हमारी स्किन, और स्किन के नीचे फ्लैश, और सिन्यूस जो कि बोन्स को एक प्लेस में रखते हैं. फिर बोन्स के अंदर बोन मैरो, फिर रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो है, किडनी, हार्ट, लिवर, डायफ्राम, स्प्लीन, लंग्स, इंटेस्टाइन, एंड देन मेजेंट्री और स्टमक, और पीछे जो अनडाइजेस्टेड फूड है, और जो बॉडी के अंदर डाइजेशन के वजह से स्टूल इकट्ठा हुआ है, वो इसको जो आगे आई थिंक इसको जो जनरल डेफिनेशन में जो भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी हमारे शरीर के अंदर जो सॉलिड है, वो इंटरनल अर्थ एलिमेंट है. अब इसको भगवान एक तरह से यूनिफाई कर रहे हैं कि इंटरनल अर्थ एलिमेंट और एक्सटर्नल अर्थ एलिमेंट केवल
अर्थ एलिमेंट है, लाइक जैसे जो डिस्टिंक्शन है उसको एक तरह से मर्ज करने की बात कह रहे हैं। और जो अर्थ एलिमेंट है उसको इस तरह से देखें कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, तो ये मेरा आत्मा नहीं है। और जब इसको इस तरह से देखेंगे तो हम सही विजडम के साथ देखेंगे, और हम ये अर्थ एलिमेंट हमें एक तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और हम इसकी तरफ हमारा पैशन है, ग्रेटिफिकेशन है, वो नहीं होगा, उससे हम डिसएंचेंटेड हो जाएंगे। और जब हम अर्थ एलिमेंट से डिसएंचेंटेड हो जाएंगे तो जो हमारा मन है वो एक तरह से डिस्पैशनेट हो जाएगा अर्थ एलिमेंट के प्रति। एंड आई थिंक सेम फार्मूला वाटर एलिमेंट के लिए लगाया गया। आई थिंक जो अभी हमारे शरीर के अंदर लिक्विड है, ऑयल, बेलगम, पस, ब्लड, स्वेट, फैट, टीयर्स, ग्रीस, पिटल, स्नॉट, ऑयल ऑफ जॉइंट्स, यूरिन, ये वाले एलिमेंट्स भी जो 32 बॉडी पार्ट कंटेम्पलेशन है वहाँ से लिए गए हैं। जो कोर मैसेज है वो भी यही है कि अगर हम वाटर एलिमेंट से डिसएंचेंटेड हो जाए तो हमारा जो मन है एक तरह से डिस्पैशनेट हो जाएगा। What monk is the water element? The water element may be either internal or external. What is the internal water element? Whatever internally belonging to oneself is water, water you're clung to. That is bile, alcohol, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, spittle, snot, oil of joints, urine, or whatever else internally belonging to oneself is water, water you're clung to. This is the called the internal water element. Now both the internal water element and the external water element are simply same, कि दोनों चाहे बाहरी जल धातु या हमारे शरीर के अंदर का जल धातु सब एक ही है। And it should be seen as it really is with correct wisdom. Thus, this is not mine, this is I am not, this is not myself. When one sees it really is with correct wisdom, one becomes disenchanted with water element and makes the mind dispassionate towards water element. इसी तरह से जो अगर तेजो धातु और फायर एलिमेंट की बात आ रही है, इसके अंदर आई थिंक जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, हमारे शरीर में वो एलिमेंट जो हमें बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहा है, उसको एक तरह से फायर एलिमेंट करा गया है। या आई थिंक इस कंज्यूम्ड में भी समथिंग जो हम कुछ जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जो भी हम टेस्ट करते हैं, जिस तरह से वो डाइजेस्ट होता है, वो भी उसको भी एक फायर एलिमेंट का रूप दिया गया है। और आई थिंक रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम, वही सेम मेथड लगाया गया है। What monks is the fire element? The fire element may be either internal or external. What is internal fire element? Whatever internally belonging to fire, fiery or clung to, that is by which one is warm, ages or is consumed, that is by what is by which what is eaten, drunk, consumed, and tasted get completely digested. Whatever else internally belonging to oneself is fire, fiery or clung to. That is the internal fire element. Now, both the internal fire element and the external fire element are simply fire element, and that should be seen as it is really is
with correct wisdom, thus, this is not mine, this is I am not, this is not myself. When one sees it thus, as really is with correct wisdom, one becomes disenchanted with that element and makes the mind dispassionate towards the fire element. And I think जो मैसेज है कि जब हम फायर एलिमेंट को चाहे वो एक्सटर्नल है इंटरनल है उसको सही तरीके से देखते हैं तो हमारे अंदर जो विजडम आती है तो हम फायर एलिमेंट से अट्रैक्ट नहीं होते और जो हमारा मन है वो डिस्पैशनेट हो जाता है फायर एलिमेंट के प्रति. And I think next it repeats for air element. Air element की जो I think internal डेफिनेशन दी गई है कि हमारे अंदर जो भी एयर है या एयर के जैसा है जो हमारे अंदर जो भी सांस चल रही है जो कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है जो हमारी बेली के अंदर हुआ है जो हमारे बाउंड्रीज के अंदर हवा है और जो हम लिम्स की बात आई कि लिम्स का जो है और जो भी हम सांस अंदर लेते हैं वो जो सांस बाहर लेते हैं वो जो है हमारे शरीर के अंदर इंटरनल एयर एलिमेंट है. और यहाँ पे भी एक तरह से यूनिफिकेशन की बात आती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कि उसको एयर एलिमेंट की तरह देखें माने कि ये एक मैं नहीं हूँ ये मेरा नहीं है और ये मेरा आत्मा नहीं है. और जब उससे हम एयर एलिमेंट डिसएंचेंट करेंगे तो हमारा मन जो है एयर एलिमेंट के प्रति डिस्पैशनेट हो जाएगा. What mouth is the air element? The air element may be either internal or external. What is the internal air element? Whatever internally belonging to oneself is air, airy, clung to, that is up to going winds, upgoing winds, downgoing winds, winds in the belly, winds in the bowel, winds in the coast, the limbs, in the in breath and the out breath, or whatever else internally belonging to oneself is the air, airy, clung to. This is called the internal air element. Now both internal air element and the external air element are simply air element, and that should be seen as it really is, with correct wisdom. Thus, this is not mine, this is I am not, this is not myself. When one sees it thus it really is, with correct wisdom, one becomes disenchanted with the air element and makes the mind dispassionate towards the air element. तो अब इसके बाद आई थिंक जो फिफ्थ एलिमेंट की बात आ रही है वो स्पेस एलिमेंट की बात आ रही है. हमारे शरीर में जो भी स्पेस एग्जिस्ट करता है पहले तो उसकी डेफिनेशन आ रही है कि जो हमारे खानों के अंदर स्पेस है, जो हमारे नाक के अंदर स्पेस है, जो हमारे मुंह के अंदर स्पेस है, जो हम जो खाना खाते हैं वो जिस स्पेस में जाता है, जो हम जिस स्पेस में हम स्वेलो करते हैं और जहाँ जाके वो इकट्ठा होता है उस स्पेस की बात हुई जो. और उसको फिर एक आई थिंक जनरल दे दिया कि जो भी स्पेस हमारे इंटरनल है बिलोंगिंग जो जो कि हमारे शरीर के अंदर है एंड उस स्पेस को उन्होंने इंटरनल स्पेस एलिमेंट के अंदर डिफाइन कर दिया. एंड जो मैसेज वो मैसेज सेम है कि किस तरह से हम स्पेस एलिमेंट की तरह डिसएंचेंट डिस्पैशनेट हो जाए, स्पेस एलिमेंट हमारा मन जो है डिस्पैशनेट हो जाए. What moves is a space element. The space element may be either internal or external.
What is an internal space element? Whatever internally belonging to oneself. A space, spatial, and clung to, that is holes of ears, nose. The nostrils are door of mouth, the aperture, whereby what is eaten, drunk, consumed, tasted, gets swallowed, where it collects, whereby it is excreted from below, and whatever else internally belonging to oneself is spatial and contour. This is called the internal space element. Now, both internal space element and the external space element are simply space element, and the air, and that should be seen naturally, is with correct wisdom. Thus, this is not mine, this is I am not, this is not myself. When one sees it thus, as really is with correct wisdom, one becomes enchanted with the space element and make the mind dispassionate towards the space element. इसी को एंड में कॉन्शियसनेस के लिए करा गया है कि कोई भी जो चीज जो प्लेजेंट, इसको हम प्लेजेंट कॉग्नाइज कर रहे हैं, या हमें लगता है कि ये प्लेजेंट है, जो अपने कॉन्शियसनेस से हम उसको प्लेजेंट बोलते हैं, या कोई भी चीज जो अपने कॉन्शियसनेस से हम उसको पेनफुल बोलते हैं, या हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं, जो कि डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्टेक्ट और उससे आई हुई फीलिंग पे है. I think in screen of project can. There then remains only then there remains only consciousness purified and blind. What does one cognize with consciousness? One cognizes this is pleasant, one cognizes this is painful, one cognizes this is neither painful nor pleasant. It depends, its dependence on the contact to be felt as pleasant, that arises as a pleasant feeling. When one feels a pleasant feeling, one understands, I feel a pleasant feeling. One understands with the cessation of the same contact to be felt as pleasant, its corresponding feeling, the pleasant feeling that arose independent to the contact to be felt as pleasant, ceases and subsides. In dependence on a contact to be felt as painful, there arises a painful feeling. When one feels a painful feeling, one understands, I feel a painful feeling. One understands with cessation of the same contact we felt as painful, it corresponds. So I think जो यहाँ पे जो थोड़ा सा डिपेंडेंट ओरिजिन से रेफरेंस लेके समझा, अगर हम समझे कि जो हमें प्लेजेंट फीलिंग हो रही है, उसको हम जानते हैं कि मुझे प्लेजेंट फीलिंग हो रही है, और जब उसका प्लेजेंट फीलिंग का कांटेक्ट खत्म होता है, तो जो हम करस्पॉन्डिंग जो प्लेजेंट फीलिंग उस कांटेक्ट के डिपेंडेंट से आई थी, वो भी समाप्त होती है और वो खत्म होती है. इसी तरीके से जो कांटेक्ट से डिपेंड होके जो
पेनफुल फीलिंग आती है, एंड उसके बेसिस पे वो समझता है कि आई एम फीलिंग ए पेनफुल फीलिंग। और जब उसके कांटेक्ट का सेसेशन होता है तो जो वो पेनफुल फीलिंग है करस्पॉन्डिंगली वो समाप्त होती है। और इसी तरीके से वो न्यूट्रल फीलिंग, नाइदर पेनफुल नॉर प्लेजेंट फीलिंग की बात आ रही है कि जब उसका कांटेक्ट होता है तो वो फीलिंग आती है, और जो सेंसेशन होता है तो वो समाप्त हो जाती है। Yeah, SPG, I think you want to say. I think this is a very enlightening passage because what I understand from this is कि consciousness एक तो उन्होंने भी define नहीं किया शायद यहाँ पे, but I think indirectly it is defined through contact. Contact brings about consciousness, but I think the important thing is the moment you cognize something, there is immediately an associated feeling of some kind, pleasant, unpleasant, or neutral. So I understand therefore this uh, role of consciousness as twofold, as cognizing an object and immediately feeling associating a feeling tone to it. I think that's the main point that I understand from this. ये चित्त का ये जैसे ही वो किसी चीज को कॉग्नाइज करता है उसके साथ एक फीलिंग भी जनरेट होती है चित्त में, कॉन्शियसनेस में. That is the main thing that I think that message that I read from here. And that's very useful message for me. That I'll share this. I don't know whether I'm able to convey what I'm trying to say. It cognizes, also it gets affected through the feeling too. The moment it cognizes something, immediately there is an effect on it to the feeling too. Therefore, feeling one can never escape. Feeling will always get generated instantly. जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं एसपी साहब, बट आई थिंक द बेटर वे ऑफ सेइंग इट विल बी that consciousness manifests itself in the form of feeling. That's how consciousness manifests. और हमें पता कैसे लगेगा कॉन्शियसनेस के बारे में? मैं भी कुछ बोलना वो भी चाहती हूँ ठीक है, वो भी ठीक है. जी। एक मैं जो अभी राजेंद्र जी ने क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेटिफिकेशन कैसे होगा अर्थ एलिमेंट में, आई थिंक सो वो जो ग्रेटिफिकेशन है वो उसको यहाँ पर मतलब दिस इज हाउ वी ग्रेटिफाई। तो जो पहले कुछ पैराग्राफ्स में जो बता रहे थे अभी कि व्हाट इज अर्थ एलिमेंट, व्हाट इज एयर एलिमेंट, and every element has a element like this. What is element is air, एक second, let me just read it. There is always a clinging to it. So when there is a clinging and जैसे air, airy and cling to it, this is an internal air element. So once you, I mean, that's my understanding. I'm sharing my understanding जो मैंने पढ़ करके अभी लगा। एयर जो भी सारे जो डिफाइन किया एयर कौन से एयर एलिमेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज, एयरी प्रॉपर्टीज मतलब मूवमेंट की प्रॉपर्टी, और उससे जो चिपकाव है वो दैट इज इंटरनल एयर एलिमेंट. नाउ ही इज ऑल्सो सेइंग दैट internal element when comes in contact with the external element, that means there is a contact which अभी जो हम पढ़ रहे थे और जो एसपी सर ने भी बोला कि consciousness. So when an internal and external comes in contact and there is a feeling arose in it, जो सर ने बिल्कुल जैसे बोला कि कांटेक्ट होता है, उसका दो एस्पेक्ट्स है कि एक तो आपको बाहरी इससे आपका कांटेक्ट हुआ, दूसरा आपको उससे फीलिंग भी अराइज हो रहा था. तो इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन
contact and the feeling arose with it, and that lead to gratification or danger. इस तरह से हम that's how I see it, कि अगर मुझे ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, मैं बहुत मजा ले रही हूँ, तो फिर देन आई सी डेंजर इन इट, एंड देन उससे एस्केप करने के लिए आई लुक फॉर वेज, दैट इज फोर नोबल ट्रूथ. सो दैट्स हाउ आई सी. राजेंद्र राजेंद्र जी का जो सवाल था कि हम एलिमेंट से हमें ग्रेटिफिकेशन कैसे होता है, तो मुझे कुछ अभी विचार आया है, पूनम जी ने कहा तो उसी से ऑफ शूट. अभी रंजन जी ने कहा था कि उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, तो जब उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई तो ऑब्वियसली ही मस्ट हैव फेल्ट डिलाइटेड कि हाँ पे नॉर्मल हो गई. तो दैट्स अ डिलाइट, एंड इम्प्लिसिट इन दैट फीलिंग इज द अटैचमेंट. इम्प्लिसिट इन दैट फीलिंग इज अटैचमेंट. तो मुझे लगा कि रंजन जी के सवाल का जवाब ये हो सकता है. Yeah, when there is an absence, we realize it. Otherwise, हाँ we हाँ हाँ take हाँ it for हाँ. granted कि नहीं हमारा नहीं ये नहीं जो नहीं 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 पार्ट नहीं. है ये सही है. सांस बंद हो हाँ जाता है, टेस्ट बंद हो जाता है, then we don't या मतलब then only एग्जैक्टली we एग्जैक्ट. recognize those things. हाँ नहीं नहीं एग्जैक्टली वही जो आप कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ. तो वर्डिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट. तो उन्होंने कहा कि ग्रेटिफिकेशन डिलाइट कैसे होता है, हमारा एयर एलिमेंट के साथ डिलाइट कैसे होता है, तो उसी को मैं एलेबोरेट कर रहा था. इन्होंने एग्जांपल दिया कि एक बार इनकी ब्रीदिंग की दिक्कत हुई थी और दवाइयाँ खाने के बाद जब ठीक हो गया तो यू मस्ट हैव फेल्ट डिलाइटेड. एक फीलिंग ऑफ डिलाइट तो आई होगी ना. दिस इज द ग्रेटिफिकेशन. क्योंकि हमारा एक नॉर्मल चलता आ रहा है, ग्रेटिफिकेशन चलता आ रहा है, हम रियलाइज नहीं करते. तो उस रियलाइजेशन के अंदर आप देखो इम्प्लिसिट है कि अटैचमेंट भी है उसमें. अटैचमेंट इज इम्प्लिसिट इन दैट डिलाइट. I think I you are beg to both differ. absolutely I right. beg to differ. I ओके, beg to differ. I अच्छा mean, बताइए there जी. is no delight in that. आप I mean, I am breathing. It is a normal thing to happen. I have to breathe. Yes, so long I am living, and there is, whether you can call it, I mean, a desire to live. Yes, there is a desire to live. I don't want to die right now. If it is in my hand, I would not like to die, but it's not in my hand. Now, point is, if that's why we do medicines, that's why we go to the hospitals. There is a inherent in the society. This, even at the time of Buddha, people were getting sick, people were getting treated, they were given medicines. So, in that sense, there is it's not a delight. It is just the necessity. नहीं नहीं Keeping मैं body, because if a fit body and a fit mind can become more enlightened than a sick mind and a sick body. See, it has to be seen from that point of view. यस सर. आप एक बार, अभी आपने एयर एलिमेंट लिया, अब अर्थ एलिमेंट में भी देखिए एक बार. जो अर्थ एलिमेंट को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, उस हिसाब से भी एक बार देखिए, उस भी पैरामीटर में लगा कर देखिए. नहीं, कोई भी एलिमेंट हो, देखो ऐसा है, एनी एलिमेंट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, it is not clinging. I'm saying there is no clinging inherent in it, because they are there. All these elements are present in my body as they are present in the nature. The clinging happens to, for example, food. I'm getting I have developed clinging with the food. Now food has all the elements and do as I have. और वो जो पर्टिकुलर उसका जो टेस्ट है, उसका जो ऑरा है, उसके साथ जो मेरी स्मेल है या कुछ है, उसके साथ जो मेरी क्लिंगिंग है, वो एक अलग चैप्टर है. उसमें मतलब जो बेसिक चीजें हैं, ये 5 जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इनके साथ तो क्लिंगिंग हो ही नहीं सकती. क्लिंगिंग कैसे होगी? Jinder ji, I हाँ, think the clinging is in है. the form of this I am, this is myself, etc., etc. It is clinging in that sense. कि ये मेरे को बहुत प्यारी है, ये मेरी है. नहीं, यहाँ जो है ना सटल डिफरेंस जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो ये है, टू रिमेन हेल्दी, to remain fit as long as you can,
will you call it clinging? It is implicit in the fact that I'm regarding it as self. I mean, मैं अगर Implicit मान in लीजिए that. योगा करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ, तो सेहतमंद ठीक है। रहना क्लिंगिंग कहलाएगी, और इज इट ए नेसेसिटी? नेसेसिटी भी है और क्लिंगिंग भी है। नहीं, क्लिंगिंग तो नहीं कह सकते इसको आप। यहीं पर मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। मैं कुछ कहूँ जो सर, चीज मैं कुछ कोई कहूँ। जरूरी है वो क्लिंगिंग नहीं हो सकती। मुझे बुद्ध ने जब खाना छोड़ दिया, he left eating, he left everything, and he went for fast, and ultimately he was virtually going to die when he got that milk, and he revived, and then he decided, no, I have to follow a middle path दीपक wherein जी I might will have some not. clue. दीपक जी आप Pardon? बताएं। Pardon? मुझे लगता है कि रजिंदर जी, एक आर्गुमेंट में फॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि हम जब कह रहे हैं कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं शरीर को ठीक रखना चाहता हूँ, ये मैं जो वर्ड आ गया ना, ये एक फॉलिसी है कि मैं नाम की तो चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती ना जी। ये तो कहा जाता है भाई, ये तो बातें करने में कहा जाता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं कहूँ तो क्या कहोगे? लेट मी ऐड। बोलिए। एक तो मैं आपने पहले एक कमेंट किया था, थोड़ा सा मैं टेंजेंट जाऊंगा उस पर कि मेरी डिजायर है कि मैं जीऊं। आपने ये स्टेटमेंट दिया भी है ना, इफ आई एम रिपोर्टिंग इट करेक्टली, मेरी ये डिजायर है कि मैं जीऊं। जीव से नहीं, आप गलत समझे हैं। नो 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 आपने ऐसा कुछ नो बोला क्या? नो नो, मैं जीना I चाहता didn't हूँ। mean that. You are misrepresenting my fact. मे बी, चलो ऑल नहीं, ऐसे गलत मत बोलिए ना दीपक जी। जो मैंने बोला है उसको पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। मैंने ये कहा है कि my desire is to remain healthy as much as I can with my efforts. So that is why you do the medicines, you take the medicines, you do whatever you can to keep your body healthy. Now this is a desire or this is a necessity. This is where I am stuck. So nothing beyond, nothing else. There I have to differentiate between the necessity and the desire. Just talk about that and just don't talk about anything else. एक सेकेंड। नेसेसिटी कम्स आउट ऑफ डिजायर, पहली बात। नेसेसिटी कम्स, अरे यार छोड़ो यार, ये तो अच्छा वो दर्द साहब होते तो और बात होती। मैं सिर्फ चलिए कोई बात नहीं, इसको यहीं बंद। दीपक जी एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड। जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो ये नहीं हो रहा है कि सांस लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये वाली बात नहीं हो रही है। आई थिंक सो वी आर डिस्कसिंग हियर एलिमेंट्स, एंड व्हेन देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, एयर एलिमेंट के लिए भी अगर बात कर रहे हैं तो भी ये एयर एलिमेंट में जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं इंटरनल एयर में यही है। एयर एलिमेंट में बी ईदर एक्सटर्नल और इंटरनल। व्हाट इज इंटरनल एयर एलिमेंट? Whatever internally belongs to oneself is air, airy and clung to, that is upgoing winds। अब उसको सांस बोल रहे हो या हवा जैसा कुछ आ रहा है उसको भी बोल सकते हैं। डाउन गोइंग winds, winds in the belly, winds in the bowl, winds that goes through the limb, in breath and out breath, or whatever else internally belongs to oneself is airy, air, airy and clung to। This is internal air element। So जो हम premise पे जिस पे हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा different बात कर रहे हैं, और जो बोला जा रहा है वो शायद थोड़ा different आ रहा है। तो I would request you to consider। इधर कहीं पे भी शायद नहीं बोला है कि मरना, मतलब लाइक सांस लेने से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ एलिमेंट, आई थिंक सो दैट इज कि जो मूवमेंट है दैट इज मूवमेंट, मूवमेंट इज ऑल अबाउट एयर। So if you have Rajendra ji, if you want to say in that, if you have question with respect to the air element, I think so that is, and anyone can comment on this. Sorry, I got disconnected बीच में, so I couldn't hear everybody. लेकिन राजेंद्र जी, I think दो बातें हैं। एक तो जैसे हम बात बोलते हैं ना कि there is a
you have to maintain a healthy sense of self, both in physical terms as well as in mental terms. It's a mind-body thing. वो तो है ही. That is a requirement to be on the path. But there is a subtle attachment to these things, which you sometimes don't even realize. And that attachment comes through a sense of self, which is basically what we learn anatta about. So these two things are happening simultaneously. So I think if we keep that in mind, then there is no contradiction as far as I can see. On the one hand, yes, very well said, and I fully agree with you. ये जो distinction है between what must be there and what is being craved for. basically That what you're is, taking delight in. If you engage in yeah, could be, yeah. that is what the gratification is. ये Taking बड़ा, this is something. Okay. I don't. I mean, that's I think our it's ability to मेरे को explain थोड़ा these सा things is इसमें limited. Our ना ability to explain these इस things is टीचिंग में limited. मेरे को बहुत प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं इसमें अब और बात नहीं करना चाहता. Very subtle, Yes. very subtle arguments. We'll keep it at Can a I Rajan, can I say something? जी केशव जी बोलिए. In fact, no, it's our elements. We are talking about elements and anatma bhav, impermanency. This all correlated to our body systems. No, that is basically when we experience during meditations we have seen. We are feeling a heaviness. This is part of the. This is giving the clarification and explanation in this paragraph. And all things is the anatta bhav. This is not mine. And ultimately, this is again impermanency. All these things involving in this discussion. And what Rajendra is sharing is correctly, it is a method of process of improvement of the systems of the body. This is not an attachment. This is a system of improvement. And improvement is living the healthy mind, healthy body, all these things together joined. This is not again attachment. This is what I have to say. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rajendra ji. Thank you so much. Should we close, Deepak ji? Yeah, I think Thank you so much, दीपक जी. एक छोटा परित्य करके. कुछ कॉन्शियसनेस का पार्ट रह गया पढ़ने वाला क्या? हाँ, वो दीपक जी पूछिए. कॉन्शियसनेस रह रहा है. रह गया, अगली बार कर लेंगे, कोई बात हाँ, नहीं. That's हम लोगों ने ये delicate. ओपन रखा है. राजेंद्र जी ठीक है. will ask this question again to Dhar sir. Okay, all right. I'll just, I think, जी सर. रह गया था उसको फटाफट पढ़ लेते हैं. One understands the cessation of the same contact to be felt as painful. Its corresponding feeling, the painful feeling that arose in dependence on the contact to be felt as painful, ceases and subsides. In dependence on contact to be felt as neither painful nor pleasant, there arises a neither painful nor pleasant feeling. When one feels a neither painful nor pleasant feeling, one understands, I feel a painful feeling, neither painful nor pleasant feeling. One understands the cessation of that same contact to be felt as neither painful nor pleasant. Its corresponding feeling, the neither painful nor pleasant feeling that arose in dependence on that contact to be felt as neither painful nor pleasant, ceases and subsides. Monk, just as from the contact and friction of the two fire sticks, heat is generated and fire is produced. With the separation and disjunction of these two fire sticks, the corresponding heat ceases and subsides. So too, independence on contact to be felt as pleasant, to be felt as painful, to be felt as
neither painful nor pleasant. There arises a neither painful nor pleasant feeling. One understands with the cessation of the same contact to be felt as neither painful nor pleasant, its corresponding feeling ceases and subsides. Basically, first pachya vedana. समापन करेंगे। सबे सत्ता सुखी होंतु।